अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं irritants in China US relations. Irritants in US China और China US relations, ये हमारा आज का टॉपिक है। and this topic is actually part of the syllabus foreign policy analysis 7th semester BS political science, and also it is part of the current affairs. So we will try to solve this question. Actually, there is a question in one of the past papers discuss the irritants in China-US relations. Acha, so we have discussed during our lectures about the foreign policy analysis क्या है, किस तरह होगा, फिर foreign policy की determinants क्या है, इसके अलावा foreign policy objectives और principles ये क्या है, इसके अलावा what are the tools through which a state can achieve its foreign policy objectives. तो tools में हमने मुख्तलिफ tools like diplomacy, foreign aid, sanctions, war, etc. ये tools वगैरह हमने पढ़े थे. तो we had already developed the basic framework through which we can analyze the foreign policy of a state, and in this course we had studied about the case studies of foreign policy of Pakistan, US, China and India. तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, this is actually a solution of a question which was asked in previous papers, that what are the various irritants in China-US relations. अच्छा, तो ये है question, and here we are trying to answer it. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आंसर. मैं जनरल आउटलाइन दूंगा और मुख्तलिफ पॉइंट्स हैंड्स की शक्ल में यहाँ लिखूंगा और इस पर हम डिस्कशन भी करते रहेंगे. तो पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन. अच्छा भाई, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है कि एक्चुअली द US-China relationship is very complex. ये एक complex relationship है. It is not simple that we call it either strained, tense, or we call it either normalized or normal or good. So it is very complex relationship both historically and presently. अगर हम इसकी हिस्ट्री को देख ले तो मुख्तलिफ periods में ये relationship मुख्तलिफ रहा है. But currently there is very great distrust and trust deficit between these two highly important states. अब इस रिलेशन की हिस्ट्री क्या है? अगर हम 1949 से 1970 तक ले तो ड्यूरिंग दिस पीरियड the relationship was sour, the relationship was worst, and there was no normal relationship. So during this period, relationship was strained and hostile because in 1949, after the communist revolution in China, when the Chinese Communist Party claimed victory and they formed government, and the nationalist government in China declared as themselves the Republic of China in exile and formed government in Taiwan. The nationalists
formed government in Taiwan and called themselves the Republic of China, while the communists in the leadership of Mao proclaimed victory and formed the communist government in China and called it the People Republic of China (PRC). तो इसी वक्त the United States recognized the Republic of China as legitimate, while they did not recognize the People Republic of China or the Chinese Communist Party as the legitimate power of China. तो यहाँ से the relationship was hostile, tense, deteriorated, और ये till 1970 इसी तरह चलता रहा। फिर क्या होता है, इसी दौर में Korean War, maybe even the US and Chinese forces faced each other. They fought against each other, और फिर ये relations normalization की तरफ गई from 1970 to 1980, जब 1972 में निक्सन ने विजिट किया चाइना का। Nixon's visited to China in 1972, and Pakistan greatly supported this visit officially. और इसके बाद relations normalization की तरफ गई, और इसका बुनियादी फैक्टर उस वक्त था split between China and Soviet Union. चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान रिलेशंस उस वक्त ख़राब थे, तो इसका फ़ायदा यूनाइटेड स्टेट्स उठाना चाहता था और उसने उस वक्त चाइना के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की थी। अच्छा, तो फिर इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट इन 1979 US established diplomatic relations with China. Acha, for your informations, during this period from 1949 to 1970s, China was not part of the UN Security Council. Its membership was suspended. Though during the formation of United Nations, China was awarded as the membership of Security Council, but after the 1949 revolution, its membership was suspended. And then in the 1970s, when diplomatic relations were established with United States, तो फिर China वापस UN Security Council में आ गया। अच्छा, अब इन 1949 से 70 तक United States सपोर्ट करता रहा Republic of China को, which was the nationalist government in Taiwan. Our peer in 1970s afterward, United States stopped supporting Taiwan, though ताइवान के साथ ताल्लुकात somehow रहे, और आज भी ये एक irritant है यूएस चाइना रिलेशनशिप में, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया WTO, and with the support of United States, China joined WTO in 2001. और वो दिन और आज का दिन, इसी दौरान China greatly enhanced its economic and diplomatic clout throughout the world, और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की बुनियाद पर चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता हुआ आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, एंड expectedly it will surpass United States in 2030. अच्छा, तो ये एक हिस्टोरिकल आउटलुक था यूएस चाइना रिलेशनशिप का। अभी till 2010 the relationship was not that much worse, but in the 2010 decade, during the administration of Barack Obama, and due to his policy, Asia pivot policy, again the relationship
deteriorated, worsened, and this policy declared China to be the strategic and power competitor of United States, and most of the US policies in Asia Pacific center about the containment of China. तो अभी ये strategic competition की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और relationship नॉर्मल नहीं रहे। तो यहाँ पर नव हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इरिटेंट्स। हमने एक बैकग्राउंड डेवलप किया और अब हम इरिटेंट्स इन दिस रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। अच्छा, इरिटेंट्स इन यूएस चाइना रिलेशंस, इसकी जगह अगर आ जाए स्टेलमेट्स या रीजंस तो फिर भी सेम मीनिंग होगा। तो व्हाट आर द इरिटेंट्स इन यूएस चाइना रिलेशंस? We are discussing it in various points. Firstly, we have to understand that China and US have antagonistic views on issues related to global security, technology, economics, and ideology, and there is little place for adjustments that could relieve simmering relations. Uh, तो ये कौन सी वजूहात है? The first one is the issue of Taiwan Strait. पहले भी हमने डिस्कस किया कि 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद there was the nationalist government who fled towards Taiwan, where they established their government and called themselves the Republic of China. और चाइना में माओ ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर किया। तो ये ताइवान एक्चुअली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पेनिनसुला। ये एक छोटा सा जजीरा है इधर, और ये परस करे हमारे साथ चाइना है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है इट इज़ ताइवान स्ट्रेट। स्ट्रेट इज़ एक्चुअली पानी का वो जोरापियाई शक्ल या हिस्सा होता है जो दो खुश्की की टुकड़ों को मिलाती है। तो देयर इज़ अ नैरो स्ट्रेट बिटवीन द ताइवान पेनिनसुला एंड चाइना, इसी ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। तो इशू ये ताइवान स्ट्रेट और ताइवान दोनों है। ताइवान डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट कंट्री, जबकि चाइना की पॉलिसी है का ओपिनियन है कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना। There is one China policy, official policy of China, People Republic of China, and according to this one China policy, though the system of governments are different, yet Taiwan is part of the China. अब यूनाइटेड स्टेट्स का इशू यहाँ क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली सपोर्ट ताइवान अगेंस्ट चाइना। अभी शायद आपको याद हो, रिसेंटली नैन्सी पेलोसी, शी इज़ द स्पीकर of the House of Representatives of United States Congress. So she visited Taiwan, and China greatly opposed and resisted this move and called it even a hostile move by United States. So Taiwan issue is one of the bone of contention between United States and China. And even if the militarization of this region continues, it may lead towards the full-fledged war between US and China. So Taiwan issue is one of the irritants in US-China relation. अच्छा, secondly, South China Sea dispute. South China Sea dispute क्या है? इन द साउथ ऑफ चाइना, यहाँ पर हमारे पास है साउथ चाइना सी। ये यहाँ पर सपोज जापान हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड अदर टेनी स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स।
तो ये South China Sea, historically China claims the whole South China Sea, while United States call it international waters and free for navigation. The United States policy for the Indian Ocean, Indo-Pacific Ocean, and South China Sea is free and open Indo-Pacific, while China call it an open aggression and violation of the territorial integrity of China. Historically, China claims South China Sea as part of the China. 9 देश पॉलिसी है चाइना की कि ये खिता हिस्टोरिकली चाइना की कंट्रोल में रही है और चाइना की सोल प्रेरोगेटिव है यहाँ पर। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स है, यहाँ पर मिनरल्स है, ये एक ग्लोबल ट्रेड की मेन रूट है, यहाँ पर मलाका स्ट्रेट है। तो जियो strategically it is a very important point and both China and US are interested in it. तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट ये भी एक रीजन है, एक इरिटेंट है यूएस चाइना रिलेशंस में। अच्छा, the third main irritant is the trade deficit between US and China। और ये इस तरह कि यूएस और चाइना के दरमियान जो ट्रेड है, बाईलेटरल ट्रेड है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत ज़्यादा डिफिसिट हो रहा है, खसारा हो रहा है। तकरीबन यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना के अगेंस्ट ट्रेड में $400 बिलियन सालाना खसारा हो रहा है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट की जितनी इंटरनेशनल ट्रेड है और इसमें यूनाइटेड स्टेट को जो ट्रेड डिफिसिट होता है इंटरनेशनली, उस इंटरनेशनल ट्रेड डिफिसिट का फॉर यूएस द ट्रेड डिफिसिट विद चाइना ऑलमोस्ट इट इज़ 47%। मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपने ट्रेड में ओवरऑल $800 बिलियन खसारा करती है, तो ये तकरीबन चाइना के साथ सिर्फ ये $400 बिलियन है। अच्छा, ये ट्रेड डिफिसिट इज कमिंग फॉर लॉन्ग, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अगरचे देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी इन यूनाइटेड स्टेट्स और ओबामा की टेन्योर से ये मसला आ रहा है, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प वर टुवर्ड्स नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट टेंडेंसी वाज स्ट्रांग। तो ट्रम्प ने नारा लगाया था किस चीज़ का, बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन। सिमिलरली ट्रम्प ने नारा लगाया था कि नो मोर कंसेशन विद चाइना, और चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है उसमें इतना इतना डेफिसिट है, इतना नुकसान हो रहा है हमारा, हम मज़ीद अपनी इकानमी की बदौलत चाइना को तरक्की नहीं करते देख सकते। तो इसी दौरान the favorability, the distrust increased. Favorability dropped and the distrust enhanced. और ये इस तरह कि before Trump, during the tenure of Obama, 51% American people had opposed China and has called China as their enemy or competitor during different surveys. But during the Trump administration, the favorability dropped and almost 80% people called or termed China as their strategic enemy or competitor. तो जनरल डिस्ट्रेस, पीपल टू पीपल डिस्ट्रेस इज ऑन डिक्लाइन। और फिर ये एक ट्रेड वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई
ट्रेड वॉर को हमने क्लास में लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर क्या है। इस दफ़ा पेपर में डायरेक्ट ट्रेड वॉर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रेड वॉर एक्चुअली इस तरह है कि जितनी भी चाइनीज़ एक्सपोर्ट थी यूनाइटेड स्टेट्स को, या यूएस जितने इंपोर्ट्स कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, तो वहाँ पर इन पर यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ बढ़ा रहे थे। पहले से 10% बढ़ा दिए, फिर 25% बढ़ा दिए। अब इन रिटर्न जो यूएस गुड्स चाइना जा रहे थे, तो चाइना भी वैसा ही कर रहा था। 10% टैरिफ बढ़ा दिए, फिर 20%, 15%। तो ये टेट और टेट वाला मामला चल रहा था और इसे ट्रेड वॉर का नाम दिया गया। तो ये ट्रेड वॉर भी एक इरिटेंट है between the United States and China. Even with the coming of Biden administration in power, ये policy still it is in continuation. लेकिन अब वो तरीक़ेकार, वो tools बदल दी गई है। जहाँ पर हमने क्लास में tools पढ़े थे, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में टूल्स डिफरेंट थे। अब बाइडन ने टूल्स वो मल्टीलेटरलिज्म अगेन यूएस ने शुरू किया है और मुख्तलिफ इत्तेहादी पैदा कर रहे हैं मुख्तलिफ रीजन्स में अगेंस्ट चाइना। तो दिस इज द थर्ड मेन इरिटेंट्स बिटवीन यूएस चाइना रिलेशंस। अच्छा, फोर्थली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी of United States 2017. During the Trump administration, national security strategy was issued by the U.S. Secretary of State and U.S. Foreign Office, और इसमें clearly it was declared that China is the strategic competitor of United States and the U.S. aims to contain China either by hook or crook. So there is now the great power competition between China and United States. यहाँ पर we can even mention the historical Thucydides trap. Thucydides trap means that whenever a new power arises, the old power resist. So it is generally accepted that China is rising both economically and militarily, geostrategically, and the United States is resisting it. तो Thucydides trap से power competition और फिर power competition is the main irritant between US-China relation. अच्छा, इन चीज़ों के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अवेलमेंट पर भी देयर आर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो पेप्टी वी कैन मेंशन यूएस ब्लेम चाइना फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। यूएस blames China for intellectual property theft. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो रूल्स है, जो लॉज है, आपने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स कह रही है कि वी आर एक्चुअली thriving for rules-based international order while China is challenging it. और इसी context में US blames China for intellectual property theft and violating the rules of intellectual property laws. इसके अलावा US blames China for human rights abuse and system of governance. In the Western media and in the United States, there is the issue of voice against the human rights abuse by China, that within China, in Hong Kong and in Taiwan,
चाइना इज़ वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, ये वो जो जीनोसाइड का इशू चल रहा है। इसी तरह बहुत सी और मामलात में यूनाइटेड स्टेट्स चाइना पर इल्ज़ाम तराशी करती है और इसकी मुख्तलिफ शक्लें पेश करती है, बट चाइना अपोजेज इट एंड कॉल इट एज इंटरफेरेंस इन देयर गवर्नेंस सिस्टम। तो ये भी एक इशू है। सिमिलरली देयर इज साइबर वॉरफेयर बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आज की दुनिया में जंगों ने जदीद शक्ल इख्तियार कर ली है और अब जंगे मैदानों में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। तो साइबर वॉरफेयर ये भी एक इशू है। एंड लास्टली वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। United States blame China for violation of international trade rules, और वो इस तरह कि after the China joined World Trade Organization and due to the globalization China greatly enhanced its exports, even the US manufacturing job market lost its great portion। इससे नुकसान अमेरिका का हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा चाइना को मिल रहा है। वो तो दूसरी ममालिक की मंडियों तक रसाई हासिल कर चुकी है, लेकिन इन रिटर्न चाइना इज़ नॉट ओपनिंग इट्स मार्केट फॉर अदर कंट्रीज। चाइना इंटरनली सोशलिस्टिक चल रही है और बाहर की ममालिक के साथ फिर ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्टिक सिस्टम अपनाया हुआ है। तो दिस हैज़ बीन टर्न्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एज वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड rules. So these are the different irritants in US-China relations। आप इसको कंक्लूजन में इस तरह सम अप कर सकते हैं, कंक्लूजन में आप इस तरह लिखेंगे कि there are many geostrategic, geopolitical, geoeconomic and strategic, political and economic reasons and irritants in the China-US relations, like they are vying for global power competition, for impact in Taiwan and South China Sea, for enhancing their global economic outlook, etc. So these are the reasons of the strained relationship between China and United States। अभी क्या करना चाहिए? तो आपने एंडोर्समेंट ये लगानी है आखिर में कि इस कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन से न सिर्फ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को नुकसान होगा बल्कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होगा। ग्लोबल इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, आर्म्स प्रोलिफरेशन बढ़ेगा, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकेगा और ओवरऑल नुकसान होगा। जिस तरह यूक्रेन वॉर से ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक मुतासर हुई है, इवन पाकिस्तान मुतासर हुआ है। एनर्जी प्राइसेस को आप देख ले, तो इस अगर चाइना और यूएस की कन्फ्रंटेशन बढ़ती है तो इससे पूरी ग्लोब को, दुनिया को नुकसान होगा। तो इट इज़ बेटर that they compete and cooperate rather confront। Thank you very much।